Hi guys and welcome to Ask MBA. So today we are going to look at a plan of action that you as a CAT aspirant should be following for you to get a good score in the CAT 2023 examination. So guys, let me tell you, CAT is an amazing examination जिससे आपको एक बहुत अच्छा pool आपके सामने create होता है of opportunities. So the first step is get familiar with the examination pattern. Guys, I have seen a lot of different students जिनको एग्जाम पैटर्न अच्छे से पता नहीं होता, सो उसकी वजह से उनका प्रिपरेशन भी अच्छा नहीं हो पाता. सो आई होप यू आर नॉट वन ऑफ देम एंड गेट फेमिलियर विद द एग्जामिनेशन पैटर्न. द सेकेंड वन इज मेक अ प्रॉपर स्टडी प्लान. We are humans, we are target driven and we are target oriented. So create short term targets for yourself पढ़ाई को related so that आप उनको achieve कर पाओ and you get a sense of confidence. And the third one is try solving previous year's examination papers जिससे आपको CAT के एग्जाम के difficulty level और किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं उसका एक अच्छे से अंदाज आ जाएगा. So I hope this video was informative. This is going to be a 3-part series and I hope this was the part 1 which you liked. I see you in the next one.